Dear students, I'm going to present to you the derivation of the relationship that exists between the MGF of a standardized variable and the MGF of the original random variable. So let me present to you the rigorous statement of the theorem that we have in this regard. The theorem is as follows. Let the random variable x have mean mu, standard deviation sigma, and MGF mxt, where t itself lies between minus h and plus h. In other words, t exists in an open interval, minus h to h, an open interval around 0, then mzt, or you can say mzt, that is equal to e raised to minus mu t over sigma, and this entity multiplied by mx t over sigma. और यहाँ ये कंप्लीट नहीं होता, इसके साथ हमें कुछ और चीजें हैं जो नहायत इम्पोर्टेंटली इसके साथ लिखनी है. This equation holds for all those values of t which lie between minus h sigma and plus h sigma. In other words, all those values of t that exist in an open interval, minus h sigma to plus h sigma, an open interval around 0. And of course, whatever I've just said in this equation, z or z is the standardized version of the random variable x. In other words, z is given by x minus mu over sigma. तो ये जो कुछ मैंने कहा एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है. बज़ाहिर तो बड़ा ही मुश्किल सा महसूस हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है. The first point to be noted is that if t does lie between minus h sigma and plus h sigma, then we can say that t over sigma lies between minus h and plus h. इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है. जब भी आप किसी इनइक्वालिटी के साथ डील करते हैं, तो अगर एक एंटिटी पॉजिटिव है और वो उसकी जो एजेस हैं वहां पे वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर आप उस पूरी चीज की हर टर्म को उस एंटिटी से डिवाइड कर दें, तो आपकी वो जो अगर वो लेस देन साइन चल रहा है तो वो लेस देन साइन ही चलेगा. वो साइन जो है दैट इज नॉट इन्वर्टेड. अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी होती, then you know the sign would have changed. Yahan, because sigma is the standard deviation of the random variable x, and you know that the standard deviation can never be negative. तो इसलिए दोबारा गौर कीजिए, ये जो inequality है minus h sigma less than t less than h sigma, अगर इसकी हर टर्म को आप सिग्मा से डिवाइड कर दें तो वो लेस देन साइन लेस देन ही रहेगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस एच सिग्मा ओवर सिग्मा लेस देन टी ओवर सिग्मा लेस देन एच सिग्मा ओवर सिग्मा. तो जाहिर है कि सिग्मा ओवर सिग्मा विल कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट आई सेड, टी ओवर सिग्मा लाइंग बिटवीन माइनस एच एंड प्लस एच. अच्छा, ये सारी बात मैंने जो की है, मैंने क्यों की? ये इसलिए की कि आपको पहले से जो हमारी डेफिनेशन चल रही है उसके तहत आपको पता है कि mxt, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x, requires that t lies between minus h and plus h. लेकिन जो अब हम रिलेशनशिप प्रूव करने वाले हैं उसमें आपने देखा कि जो राइट हैंड साइड है वहां पे mxt नहीं लिखा हुआ, बल्कि mx
टी ओवर सिग्मा लिखा हुआ है, तो इसलिए जो अब टी की जगह टी ओवर सिग्मा है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है ना कि वो -h और h के बीच में हो, अभी हमने शो कर दिया कि दैट रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, because we have just now shown that T over sigma does lie between -h and +h. In other words, T over sigma does lie in the domain of mxt. ये तो थी पहली बात. अब इसके बाद let's proceed. So, using the definition of mxt, which is, as you know, what is the definition of the moment generating function? It is the expected value of e raised to tx. तो अगर ये जो definition है हम इसको इस्तेमाल करें और साथ जो expectation, mathematical expectation की जो properties होती हैं उनको इस्तेमाल करें, और उसके बाद students, rather than starting from the left hand side of the equation that we are wanting to prove, let us start from the right hand side. Right hand side से start करके अगर solve करते करते if we are arriving at the left hand side, then obviously the theorem is going to be proved. So let us begin. The right hand side of the equation that I want to prove is e raised to minus mu t over sigma multiplied by mx t over sigma. Now, because of the basic definition of mx of the moment generating function, I can write it as follows, that it is equal to e raised to minus mu t over sigma, expected value of e raised to t over sigma times x. देखिए ना, अगर mxt लिखा होता तो मैंने कहना था expected value of e raised to tx. अभी वहां t नहीं लिखा हुआ, वहां पे t over sigma लिखा हुआ है, तो जाहिर है I should say expected value of e raised to t over sigma times x. All right, what is the next step? ये जो constant type चीज बाहर आई हुई है, let us take it inside the expectation sign. क्योंकि जब अंदर होता है तो हम उसको बाहर निकाल सक रहे होते हैं, तो फिर जाहिर है कि अगर बाहर है तो हम उसको अंदर भी ले जा सकेंगे. So let's do that. So the right hand side is then equal to the expected value of e raised to tx over sigma minus mu t over sigma. और उसके बाद वो कॉमन निकाल लें. t जो है वो दोनों के अंदर है, sigma जो है वो दोनों के अंदर है. So what do we get? The expected value of e raised to t multiplied by x minus mu over sigma. So x minus mu over sigma क्या चीज है? Z या z. So what do we get? We get expected value of e raised to tz. तो students, अगर expected value of e raised to tx हो तो हम कहते हैं mxt. अभी आ गया है expected value of e raised to tz, तो अब क्या कहेंगे? Obviously mzt. In other words, the moment generating function of the standardized variable z. And this is exactly what we have on the left hand side of the equation that I'm wanting to prove. So that's the end of the problem. आपने right hand side से start किया और left hand side पे पहुंच गए, and so you have been able to prove this important result. Before I wind up this discussion, my dear students, I would like to present to you 3 general results pertaining to the moment generating function. The first result is as follows. m x plus a t, यानी x की जगह अगर x plus a हो हमारा variable, then what will it be equal to? It will be equal to the expected value of e raised to x plus a times t. जो वेरिएबल होता है वो ही वहां पे रखना होता है ना. तो इस वक्त हमारा वेरिएबल x नहीं है बल्कि x plus a है, और उसके बाद उसको आप सॉल्व करें जिस तरह करना चाहिए,
and that comes out to be equal to e raised to at into mxt. So this is one important general result that we should keep in mind कि जब भी कभी आप किसी वेरिएबल में एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो वो जो नया वेरिएबल है उसका जो mgf है that will be equal to the original mgf multiplied by e raised to at. The second result is mbxt is equal to the expected value of t into bx, and that comes out to be equal to expected value of e raised to bt into x. तो t की जगह पे bt आ गया, therefore it is equal to mx bt. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने वेरिएबल x को एक कांस्टेंट b के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसका जो mgf है वो ओरिजिनल mgf ही के बराबर है, but replacing, substituting bt instead of t, replacing t by bt. और अब third important result देखें, which is actually a kind of a mixture of the previous two results, and it is given as follows: m x plus a over b t. यानी आपने अपने वेरिएबल में एक कांस्टेंट ऐड भी किया और फिर उस पूरी चीज को आपने एक कांस्टेंट से डिवाइड भी कर दिया. आप जानते हैं कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इट्स एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग. जस्ट नोट दैट व्हाट आई हैव सेड. और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. वेल, यू नो व्हाट आई मीन. आई मीन के 1 over b को आप अगर m कह देते तो फिर आप लिख रहे होते यहाँ पे m, द कैपिटल M ऑफ m टाइम्स x प्लस a, लेकिन वो 1 over b है तो वो नीचे आ जाएगा. इसी तरह प्लस माइनस. ओके, सो फाइनली व्हाट्स दिस रिजल्ट? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रिजल्ट? m x plus a over b t, after all that manipulation which you can do yourself, comes out to be equal to e raised to at over b into mx t over b. यानी t नहीं है, t over b है इस वक्त. और इसके बाद students, if you put a equal to minus mu and b equal to sigma in this particular result, as you can now see on the screen, you find that you get exactly that same equation that we proved just a short while ago.